Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is the state government. Learning topics: state legislature, governor, duration of the state legislatures, the chief minister and the state council of ministers, members of the legislative assembly, MLAs. We have studied in the previous class that a government works at three levels: local level, state level and national level. We have also studied the government at local level in detail. In this chapter, we shall study about the state government in detail. The government at the state level is called the state government. This government deals with the issues related to an entire state. The government at every level has three organs: legislature, executive and judiciary. The legislature makes laws and executive implements these laws and the judiciary interprets the laws. आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो तीन टाइप की होती है: लोकल, स्टेट और नेशनल। और हर एक गवर्नमेंट के टाइप के अंडर आपके तीन डिविजन्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाता है, फिर आपका एग्जीक्यूटिव आता है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, तीसरा जुडिशरी जो लॉ को इंटरप्रेट करता है। State legislature. Every Indian state has its own legislature. A state legislative usually consists of the governor of the state and one house of legislative called the Vidhan Sabha, legislative assembly. Some states have one house while others have two. Where there is one house, it is called the legislative assembly, and where there are two houses, the upper is called legislative council and lower house is called legislative assembly. There are two houses in Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra and Jammu and Kashmir. तो आपकी लोकल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आपके दो हाउसेज या फिर एक हाउसेज भी हो सकते हैं। अगर एक हाउस होता है तो उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और अगर दो हाउसेज होते हैं तो अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। क्विक फैक्ट्स: लेजिस्लेचर विद टू हाउसेज इज कॉल्ड बाइकैमरल लेजिस्लेचर, whereas that with one house is called a unicameral legislature. तो जिस भी स्टेट में आपके दो हाउस होते हैं वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर होता है, जहां पे एक होता है उसे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। Number 1, Vidhan Parishad, Legislative Council. It cannot have more than 1/3 of the total members of the Legislative Assembly and in case less than 40 members. But total membership varies according to the population of the state concerned. Like Rajya Sabha, Legislative Council cannot be dissolved. तो Legislative Council जो होती है स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही उसकी मेंबरशिप डिसाइड करी जाती है, एंड लाइक राज्य सभा इसको भी आप डिसॉल्व यानी कि खत्म नहीं करते। नंबर 2, विधान सभा, Legislative Assembly. Like Lok Sabha, it consists of directly elected representatives. In states where there is one house, the Legislative Assembly carry out all the functions of the legislature. It consists of not more than 500 and not less than 60 members. The strength varies as per the population of the state. The assembly may be dissolved before 5 years, otherwise the normal term of the assembly is of 5 years. विधान सभा जो होती है वो लोकसभा की तरह होती है, 500 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, 60 से कम नहीं हो सकते, और जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है आपकी स्टेट की पॉपुलेशन पे। और लोकसभा की तरह ही इसे 5 साल से पहले खत्म किया जा सकता है, अदरवाइज जो नॉर्मल टर्म होता है वो होता है 5 साल का। Duration of the state legislatures. The members of the Legislative Assembly are elected through elections for a period of 5 years. However, under certain special circumstances, the governor might dissolve the assembly before 5 years. The Vidhan Parishad is a permanent house. It can never be dissolved. Members are elected for a period of 6 years. 1/3 of the members retire every 2 years and only these positions are filled through elections. तो आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स में जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो 5 साल से पहले भी खत्म करी जा सकती हैं, और वैसे इनका नॉर्मल टर्म 5 साल का होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो आपके विधान परिषद होते हैं, दे आर लाइक राज्य सभाज, इनको आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। 6 साल का इनका टर्म होता है। हर 2 साल में जो एवरी 1/4 लोग होते हैं उनको रिटायर कर दिया जाता है, और ये सीट्स इलेक्शंस के थ्रू फुलफिल करी जाती हैं। Members of the Legislative Assembly, MLAs. An MLA is a representative of the public. MLA are directly elected by the people of the state through general election for a period of 5 years. जो MLAs होते हैं they are the representatives of the public, और elections के through ही इनको elect करा जाता है। Qualifications: A person who wants to become a member of the Legislative Assembly of a state must fulfill the following requirements. He must be a citizen of India. He must be above the age of 25 years. He must not hold any post of profit
profit under the state or central government. He must not be mentally unstable or bankrupt. He should not have been convicted of for some grave offense. तो अगर किसी भी इंसान को एमएलए के इलेक्शंस के लिए कंटेस्ट करना है तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं. वो इंडियन होना चाहिए, 25 साल से ऊपर उनकी एज होनी चाहिए, कोई भी ऐसा ऑफेंस उन्होंने नहीं किया होना चाहिए जिसके लिए उनको कन्विक्ट किया जा चुका है, और उनकी कोई भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी पोस्ट नहीं होनी चाहिए. इलेक्शन ऑफ एन एमएलए. द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज और एमएलएज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. The Election Commission of India (EC), in consultation with central and the state government, issues a notification in which the dates of the election are declared. The dates for filling the nomination forms to withdraw the names, dates of voting and counting are made public. The voting takes place under the guidance of the Election Commission. After the voting and counting, the Election Commission declares the list of the elected representative. These representatives become MLAs and they form the Vidhan Sabha or the Legislative Assembly. तो Election Commission जो होती है, that is responsible for the election of the MLAs. जितने भी नाम होते हैं, withdrawals होते हैं, voting होती है, ये सारी publicly करी जाती हैं. फिर end में जब सारी counting हो जाती है Election Commission के द्वारा ही, तो Election Commission ही declare करती है कि कौन सी जगह का कौन MLA बने. A constituency is a definite area from which all the voters living there choose their representatives, that is MLAs. Every state of India is divided into a number of assembly constituencies. The elected MLAs actually represent these constituencies. These MLAs are associated with different political parties. तो हर एक स्टेट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं. इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही जो लोग होते हैं वो अपने MLAs को इलेक्ट करवाते हैं, और ये जो MLA होता है उसी पर्टिकुलर एरिया में ही आपके लोगों को रिप्रेजेंट करता है. MLA to minister or chief minister. An MLA can become a minister or chief minister of state. Before understanding this point, we must be familiar with some terms like majority, ruling party, opposition, etc. तो MLA जो होता है वो किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर या फिर आपका मिनिस्टर बन सकता है. A political party whose MLAs win more than half the number of constituencies in a state is said to be in a majority. Majority is a situation when more than half the number in a group supports a decision or an idea. तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें अगर मोर दैन 50% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक पर्टिकुलर MLA जीत जाता है तो वो मेजॉरिटी होती है, और वही दिखाता है कि आपके आगे की गवर्नमेंट किस तरीके से फॉर्म होगी. The political party which finally gets majority begins to be called the ruling party. Rest of the members belonging to different political parties form the opposition, which plays an important role in keeping a check on the ruling party. मेजॉरिटी वाली जो पार्टी होती है वो मेन गवर्नमेंट को फॉर्म कर देती है, और जो बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं जो मेजॉरिटी नहीं क्लेम कर पाते हैं वो ऑपोजिशन पार्टी बन जाती है. एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जो रूलिंग पार्टी है उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए. We can understand all this through an example of Uttar Pradesh State Assembly election results 2022. Uttar Pradesh Assembly elections 2022 results. Government 280, BJP 255, ADS 13, Nishad 06, SBSP 04. Others 1, nominated 1, vacant 1, vacant 1. Total 403. Opposition 123, SP 108, RLD 09, INC 02, Unallied 03, JSTL 02, BSP 01. तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि कौन सी पार्टी मेजॉरिटी पार्टी है और कौन सी पार्टी माइनॉरिटी के साथ ऑपोजिशन पार्टी में बदल चुकी है. Here we can see that the Legislative Assembly of UP has altogether 403 constituencies. Those who won the contest of assembly elections belonging to different political parties became MLAs from their constituencies. Total number of constituencies means total number of MLAs, that is 403. To form a majority government, a political party needs 202 MLAs. The Bharatiya Janata Party is the single party which fulfills this criteria as it has won 255 seats out of 403. Thus, BJP became the ruling party. Other MLAs of different political parties became the opposition. So far, major opposition party is concerned, it is undoubtedly SP with 108 MLAs. After elections, the leader of the party that has won a clear majority of votes is invited by the governor to form the government. If no party wins a clear majority, a coalition government is formed. The majority party chooses one of its leaders to become the chief minister of the state. The governor only makes the formal appointment and the chief minister takes final decision. तो आपके
ये जो ऊपर उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे टोटल आपकी सीट्स 404 है, तो किसी भी गवर्नमेंट को फॉर्म करने के मेजॉरिटी के लिए आपको 202 से ज़्यादा सीट्स ज़रूरी हैं। तो इस केस में बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, उसकी ज़्यादा सीट्स है, 255 सीट्स है, तो उन्होंने मेजॉरिटी गवर्नमेंट के साथ अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी और बाकी सारी जो पार्टीज़ हैं वो ऑपोजिशन पार्टीज़ में आ जाती हैं। Governor. The governor is the head of the state. He is appointed by the president for a term of 5 years on executive. However, he is only the official head appointed on the recommendations of Union Councils of Ministers. He serves till the pleasure of the president and can be transferred by the president from one state to another. He acts on the advice of the chief minister who holds the real power. जो गवर्नर होता है, he is the head of the state, लेकिन ये हमेशा प्रेसिडेंट के थ्रू ही अपॉइंट किया जाता है और प्रेसिडेंट की विल पे ही ये काम करता है। मेन जो होता है चीफ मिनिस्टर होता है, फाइनल कॉल भी उन्हीं का होता है और प्रेसिडेंट कभी भी अपनी मर्जी से गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। The governor of a state exercises legislative, executive, judicial and discretionary powers. He is answerable to the president and on many occasions executes the order of the president. जो गवर्नर होता है उसके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल पावर्स होती हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होती हैं एंड ही इज डायरेक्टली अकाउंटेबल, आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट. Like the president, the governor is responsible for all appointments at high offices within the state. He can address the legislature at any time or send written messages to it. He has the power to summon a session of the legislature or even close one. He can also dissolve the legislative assembly on the advice of the council of ministers. तो आपके जो गवर्नर होते हैं बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह ही इनकी स्टेट में पोजीशन होती है, हेड होते हैं, मैसेजेस ये ट्रांसफर करवा सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को समन भी कर सकते हैं यानी कि बुला भी सकते हैं और खत्म भी कर सकते हैं. All bills passed by the state legislature have to be approved and signed by the governor. On certain occasions, when the state legislature is not in session, the governor issues orders which are known as ordinances. These are valid till 6 weeks after the next session of the legislature. तो कोई भी बिल पास करना होता है स्टेट लेजिस्लेचर में तो गवर्नर का अप्रूवल और साइन होना ज़रूरी होता है. अगर कोई सेशन नहीं होना होता है तो उससे पहले ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाता है, 6 हफ्तों तक वो वैलिड होता है. उसके बाद दोबारा आपका जब लेजिस्लेटिव असेंबली को बुलाई जाती है तो उसको बिल को पास करवा दिया जाता है. A finance bill can be presented in the legislature only when the governor has recommended it. The governor has the right to pardon or reduce or defer the sentence of convict. फाइनेंशियल बिल जो होता है वो हमेशा तभी लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है जब गवर्नर की रजामंदी होती है और गवर्नर के पास पार्डन, रिड्यूस और डेफर करने का भी पावर होता है किसी भी कन्विक्ट को. Quick facts. A person can be the governor of more than one state at a time. और एक जो इंसान गवर्नर एक स्टेट का होता है वो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर रह सकता है. The Chief Minister and the State Council of Ministers. The leader of the majority party in the Vidhan Sabha is appointed of that state. Like the President of India, the governor also has no choice of his own in this matter. Only in the case no political party is able to muster a clear majority in the Vidhan Sabha, the governor can use his discretion in deciding as to who could get the support of the majority in the House and become the Chief Minister. तो आपके जो विधान सभा में जितने मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर होते हैं वही आपका सारी चीज़ें एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड करवाते हैं. लेकिन अगर कहीं पे मेजॉरिटी नहीं आ पाती है तो गवर्नर का रोल या चीफ मिनिस्टर का रोल आ जाता है एंड ही अपॉइंट्स ऑन हिज विल कि कौन सी पार्टी मेजॉरिटी के लिए सामने लाई जा सकती है. The first step in the formation of the Council of Ministers is the appointment of the Chief Minister and on his advice to make the appointment of other ministers. सबसे पहले Council of Ministers के लिए Chief Minister का होना ज़रूरी होता है. Chief Minister के recommendation में बाकी ministers को Council of Ministers में शामिल किया जाता है. Like the Union Council of Ministers, the State Council of Ministers has the following 3 categories of ministers. Cabinet Ministers. They are the most important and senior most member of the Council of Ministers. They independently hold the change of the important portfolios and their number is normally small. तो आपके जो Council of Ministers होते हैं चाहे वो यूनियन हो या फिर State Council of Ministers हो उसमें 3 कैटेगरी के लोग आते हैं. सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा नंबर्स नहीं होते हैं एंड दे हैव द accountability, responsibility to change the portfolios and important questions. Quick facts. Sucheta Kriplani was the first woman chief minister of India. Sucheta Kriplani जो थी वो सबसे पहली ऐसी महिला चीफ मिनिस्टर बनी इंडिया की.
Ministers of State. In the second category are listed the Ministers of State. They sometimes hold the independent charge of the department mentioned at times. They may be required to assist the cabinet ministers in the administration of their portfolios. They ordinarily do not attend the meetings of the cabinet. तो जो आपके Ministers of State आते हैं वो usually जो cabinet ministers होते हैं उनको assist करने के लिए help करते हैं और कभी-कभी इनको independent charge भी दे दिया जाता है, जैसे कि इनके departments होते हैं जिनमें इनको डाल दिया जाता है और ये usually ये cabinet meetings में नहीं आते हैं. Deputy Ministers. The deputy ministers form the third category of the Council of Ministers. They do not hold independent charge of any portfolio but are attached with the cabinet ministers and the ministers of state. The nature of their work is such as is assigned to them by the minister in charge of the department. फिर आपके deputy of ministers आते हैं, ये भी आपकी third category होते हैं Council of Ministers के, ये आपके minister of state और उसके ऊपर जो cabinet ministers होते हैं उनको help या assist करने के लिए use में आते हैं. उसके अलावा इनका जो nature होता है इनको अलग-अलग फोर्सेस में या अलग-अलग काम के लिए असाइन करा जाता है. पार्लियामेंट सेक्रेटरी. They are neither ministers properly so called, nor do they hold the charge of any department. They are appointed by the chief minister and are responsible to him. The chief function is to do the functions authorized by the chief minister. फिर आपके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी आ जाते हैं. इनके पास कोई भी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नहीं होता है. चीफ मिनिस्टर इनको डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं और इनकी होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चीफ मिनिस्टर के तरफ ही होती है. Normally, the Chief Minister and the Council of Ministers hold the office till the life of the Legislative Assembly, of which they are the members. The Council of Ministers is collectively responsible to the Legislative Assembly of the state. और ये Chief Minister and his Council of Ministers तब तक काम करते हैं जब तक कि इनकी जो रूलिंग मेजॉरिटी पार्टी होती है वो फंक्शन रूलिंग में रहती है. In case of death of a chief minister or his resignation from his post, the whole council of ministers ceases to exist. अगर chief minister की मौत हो जाती है या फिर वो किसी कारणवश resign कर लेते हैं तो जो बाकी का council of minister होता है वो automatically खत्म हो जाता है. They can be removed from office of the state legislative assembly exactly in the same manner as the lower house or Lok Sabha can remove the prime minister and his council of minister at the center. तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ठीक उसी तरीके से रिमूव कराया जा सकता है जिस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट या फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव करवाया जाता है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड ही शी इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. His position at the state is analogous to the position of the Prime Minister at center. He holds a pivotal position in the functioning of the state government. He advises the governor on all matters of state. He is the link between the Council of Ministers and the ministers and its size. He can ask for the resignation of the minister. He distributes the work among his ministers. He supervises their work and issues necessary guidelines for improvement. He can reshuffle the cabinet, bring new ministers and just drop others. तो चीफ मिनिस्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी ये होती है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनियन पे भी, सेंटर में भी, स्टेट में भी इनके बीच में गैप को ब्रिज कर देता है. ये अपनी विल पे मिनिस्टर्स को रीशफल भी कर सकता है, उनके डिपार्टमेंट्स भी चेंज कर सकता है और किसी को भी फोर्स कर सकता है कि वो अपनी पोस्ट से रिजाइन करे. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द अदर मिनिस्टर्स. The other ministers are responsible for running various government departments or ministries. They are in charge of separate offices and they are expected to perform their duties associated with their offices well. जो बाकी सारे ministers होते हैं उनको अपने अपने departments दे दिए जाते हैं and they are expected to fulfill their duties very well. After discussing the above points, we come to the conclusion that some MLAs have to discharge dual responsibilities. As we have already discussed, the Chief Minister selects some MLAs of his party as ministers. Since these ministers are basically MLAs, they perform double duties, one as an MLA and the other as a minister. Obviously, the duties and responsibilities of these ministers are more than those who are simple MLAs. They are together responsible for the work of the government under the guidance of the Chief Minister. कुछ ऐसे ministers होते हैं जिनको चीफ मिनिस्टर की विल पे ही एमएलए बनाया जाता है और कुछ होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एमएलएज ही होते हैं. तो जो मिनिस्टर्स भी होते हैं और एमएलएज भी होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एमएलएज के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और ये टुगेदर दे वर्क विद द चीफ मिनिस्टर टू कैरी फॉरवर्ड द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. Debate. The government organizes a session of Legislative Assembly in which a discussion on topics related to the public welfare is conducted. Every representative, that is MLA, takes part in it compulsorily.
The MLAs have right to put their views and ask the government for clarification related to any query in the welfare of the public. This is called the debate. उसके बाद debating sessions होते हैं जहाँ पे MLAs भी आते हैं, ministers भी आते हैं, opposition party भी आती है, जहाँ पे किसी भी एक particular topic पे या welfare topic कुछ भी हो सकता है, ये उसके ऊपर लोगों को discussion और debate करने का मौका दिया जाता है. This session is conducted for Legislative Assembly and Legislative Council simultaneously. Sometimes in special cases, a joint session for the both is conducted. Such joint session is addressed by the Governor. और कभी कभी Legislative Assembly और Legislative Council की जो मीटिंग है वो साथ साथ भी होती है या फिर joint भी कराई जाती है जिसको गवर्नर हेड करता है. In a democracy, even common people also wish to express their views and opinions about the government. Here, it is worth mentioning that it is the people who elect their representatives as MLAs. This fact authorizes them to know what is going on in the assembly and also to voice their opinions. Sometimes, when they sense that the government is not doing anything in their interest or their MLAs are not keeping their promises made to them at the time of election, they protest against them. They organize meetings for their purpose. Sometimes they take out rallies and thus try to put pressure on the government to mold it in their favor. It is the duty of every Indian citizen to cooperate with MLAs so that they do their work properly. और इन MLAs के अलावा, मिनिस्टर्स के अलावा जो पब्लिक व्यू होता है, पब्लिक ओपिनियन होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है. अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट से जो पब्लिक होती है वो अपने व्यू को सामने रखती है और अगर ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है या बनाने जाने वाला होता है जो उनके फेवर में नहीं होता है, उसके लिए प्रोटेस्ट करती है, MLAs से कॉन्टैक्ट करती है ताकि उनकी बातें भी सुनी जाए. In a democratic country like India, there are several ways such as newspapers, TV channels and other organizations through which even common people can express their opinion about the government's functions and actions. Press conference is an effective way. और इंडिया में जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इसमें टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, आपके लाइव कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं जिसमें आप डायरेक्टली अपने लीडर से बात कर सकते हैं, क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लैरिफाई करवा सकते हैं. A press conference is a gathering of media persons who are invited to hear about and ask questions on various issues. This is done with an expectation that media persons would report on these issues to the large majority of people. Thus, the main purpose of a press conference is to make the common mass aware of that after the discussion in the assembly, press conferences are organized by minister or MLAs. They do so in order to make the government's attitude public. प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, आपके जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं, आपके मीडिया वाले लोग होते हैं, वो जनरल पब्लिक के बिहाफ पे अपने लीडर्स के सामने क्वेश्चंस पोज करते हैं ताकि बाहर चल के वो बाकी मेजॉरिटी ऑफ द मास जो पीपल होता है उनको वो सारे जवाब दे पाएं. Recap. The governor is the official head of the state executive. He is appointed by the President of India for a normal term of 5 years. He can be the governor of more than one state at a time. State legislature usually consists of the governor of the state and one house of legislature called the Vidhan Sabha Legislative Assembly. Some states have two houses of legislature. The upper house is called the Vidhan Parishad Legislative Council and the Vidhan Sabha is the lower house. The members of the Vidhan Parishad are called MLAs. The state legislature makes laws that apply only to the state concerned. The chief minister is the real head of the state executive. He heads the state's council of ministers. He chooses the ministers and coordinates their work. The council of ministers has three main categories of ministers: cabinet minister, ministers of state and deputy ministers. The ministers are collectively responsible to the legislature. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपने सबसे ज़्यादा बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा, किस तरीके से उनके अंडर में विधान परिषद, विधान काउंसिल्स, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आती हैं, किस तरीके से ये फंक्शन करती हैं और किन तरीके से ये पब्लिक के साथ मिलकर ही गवर्नमेंट को कैरी फॉरवर्ड करवाती हैं. स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको खुद से करनी है.